we will be starting with work, power and energy today. ठीक है? So work, power, energy में first of all, we need to know the definition for work done. अच्छा, so work done की definition जो है, we have already studied it in O levels, but it's fine. We'll just take a recap of it. So work done क्या होता है? It is the product of force and distance covered in the direction of the force. The product of force and distance covered in direction of force. Okay. So what is the meaning of this? या अगर मैं एक चीज आप लोगों को पहले भी कहता हूँ कि if you remember the formula, it's very easy to remember the definition as well. So the formula is work done. We denote work done with WD is equals to force times distance, and we represent distance with S. So WD stands for work done. F. Sir, जी बेटा. sir, are you done with the pivot and the moment of forces? No. We'll do that. We'll do that after that. Okay. Acha, if somebody is asking me, I don't want anybody else interrupting in that. ठीक है? So अगर कोई question है, you guys are free to ask me. और अगर कोई और पूछता है, तो I don't want कि कोई और उस चीज का करे बीच में interrupt मुझे. Okay. हाँ जी, so बेटा moments वाला जो chapter है, we will be doing it in the next session, next class inshallah. Okay. Acha. So what is work done? Work done is the product of force and distance covered in the direction of the force. Okay. Acha. अब इसकी let's just take an example. So work done का unit होता है, it's joule and the symbol is J. और force का unit होता है Newton and distance is in meter. So we can also say कि जो work done होता है उसका SI unit जो है it can be joule or it can be Newton meter. So what is the SI unit of work done? It can be joule or Newton meter. Okay, now let's just take an example. Okay, just give me 1 second. Who wants to join? No. Okay. अच्छा, अब हम लोग बेटा इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से आपके पास we have a car and the car is producing a driving force of 1500 Newton. Now this car is producing a driving force of 1500 Newton and it's traveling along this road. अब क्या होता है कि ये कार जो है it travels from point A towards point B. So ये point A से point B की तरफ travel कर रही है and it covers a displacement of let's say 200 meters. So if I ask you to calculate work done, so to calculate the work done, we will use the formula कि work done is equals to force into distance. मगर एक चीज का हमें ध्यान ये रखना होता है कि आपकी जो force और जो distance है, इनकी जो direction है, they should be equal. So let's say अगर हमारी जो driving force है, the driving force is horizontal and the distance is also being covered in the same direction. So we can directly multiply 1500 times
200. So we get 30, 1, 2, 3, 4. 3, 4. So this is the work done that we will get. So अभी तक so far what we have discussed कि work done क्या होता है? It is the product of force and distance covered in the direction of the force. Okay? So work done का formula है force times the distance. Condition ये है कि force और distance की जो direction है that should be equal. Okay. Now एक और एग्जाम्पल हम ये देखते हैं. लेट्स से वी हैव अ बैरल और अ ट्रॉली. हमारे पास एक ट्रॉली है. अब दिस ट्रॉली इज बीइंग पुल्ड बाय अ रोप एंड द फोर्स जिसके साथ हम इस ट्रॉली को पुल कर रहे हैं दैट इज 30 न्यूटन एंड दिस फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री. Now let's say this trolley covers a distance of 150 meters. और इस क्वेश्चन में वो अब आपसे कहते हैं कि we have to calculate the work done. So what is happening in this? So सबसे पहले what is he saying? A trolley is pulled by a force of 30 Newton acting at an angle of 20 degrees with horizontal, with surface. Okay, so acting at an angle of 20 degrees from the surface, and it covers a displacement of 150 meters and covers distance of 150 meter. So we have to calculate his work done. अच्छा, so बेटा अगर इसमें we have to calculate his work done, तो देखो work done का फॉर्मूला तो है product of force and distance, मगर कंडीशन ये है कि distance और force की जो direction है that should be same. So we can see कि जो force act कर रही है, force is acting at an angle of 20 degrees with respect to the horizontal. So what we will do in this case, we will draw the components of the force. So we draw the vector components of this force. So we draw a right angle triangle. ये 90 degrees. So ये resultant है 30 Newton. तो इसका जो vertical component है, it is opposite to the angle. तो ये component होगा 30 sin 20. और इसका जो horizontal component होगा that will be 30 cos of 20. Okay? So हमने क्या किया? We have drawn the vector components of this force 30 Newton. So इसका जो vertical component है, it is opposite to the angle. तो ये vertical component होगा 30 cos 20 and इसका जो horizontal component है force का, that is 30 cos of 20. अच्छा, now can anybody answer which component travels in the direction of the distance? कौन सा force का component है जिसमें distance और force के component की direction same है? जी, anybody? Cos वाला. Exactly. So अगर आप इसका horizontal component देखो, which is 30 cos 20, so the horizontal component और distance की जो direction है, they are same, they are parallel. So when we use the formula for the work done, which is the product of force and distance covered in the direction of the force, so we will be considering the horizontal component, which is 30 cos
20 times the distance is 150 meters. So we'll multiply them and please just tell me कि what is the answer that we get. इसकी क्या वैल्यू आ रही है? सर थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर लो. Okay. So इसका मुझे final answer please बताओ कि what is the answer that we get for this? 30 cos 20 times 150. I hope you guys have your calculators with you as well because we will be. Okay, so 4,228 joule. And we have to give the final answer to two significant figures. So we will write it as 4,200 joule. I hope this is clear to everyone. Okay? अच्छा. So now, ये तो हो गया work done. अब हम work done के बाद, okay, चलो, just one. So just one. Okay, so we'll start with the energy now. So what is energy? Energy की definition होती है, it is the ability to do work. Okay? It is the भैया कहाँ से निकली जा रही है? ability to do work. Okay? अच्छा, अब energy में हमारे पास different types of energies हैं again. ये वही types of energies हैं that we have already studied, but let's just take a quick recap of it as well. So types of energy में first we have the kinetic energy. अच्छा, can anybody tell me कि what is kinetic energy? Kinetic energy क्या होती है? जी, anyone? जी, so what is kinetic energy? Sir, energy possessed by a mass due to its motion. Exactly. So the energy possessed by a body or an object or a mass due to its motion. तो कोई भी object जो move करता है, it possesses kinetic energy. So energy possessed by a body due to its motion. अच्छा, so what is the formula for kinetic energy? Kinetic energy का formula क्या है? Half mv square. Okay. Okay, so we have a car and this car is traveling from position A to position B. At point A, गाड़ी की जो initial speed है, let's say it was 20 meter per second. And when it reaches the point B, the final velocity of the car is 55 meter per second. So if I ask you to calculate change in kinetic energy of the car, change in kinetic energy of car. G. So can you calculate it yourself? G. Anyone? If anybody who can answer this one? Sir, is mass given of the cars right now? Oh, sorry. The mass of the car is 850 kgs. Mass of Sir, the- do we have to use the formula 1/2 mv square minus u square क्योंकि वो तो change in velocities होता है. Exactly. तो let's say बेटा अगर वो आपसे ये कह रहा है कि calculate the change in kinetic energy, तो change in kinetic energy का मतलब होता है final kinetic energy minus initial kinetic energy. अब देखो final kinetic energy निकाल रहे हो
तो you will use its final velocity. तो ये आ जाएगा 1/2 mv square. And when you want to calculate the initial kinetic energy, so we will use the formula 1/2 mu square. अब क्योंकि 1/2 m, we can take this as common, तो brackets में we will be left with v square minus u square. So you can just directly put the values in the calculator, either expression में directly value substitute करो and you'll get the answer for this. Okay, so final velocity is 55 meter per second, ठीक है, and the initial velocity is 20 meter per second. So you can directly substitute the values on the calculator and you'll get the answer for that. Ji. Okay, so let's just put the values. Mass is 850. Final velocity is 55 ka square and the initial velocity is 20 ka square. You directly substitute the whole expression and put it on your calculators and tell me okay, what is the final answer that we get. Please go ahead. Anji. 1115625. So 115,625. 625. Okay. So this is the value that we get. 115,625. Ja. G. Is it the answer? Okay. So the final answer, you have to round off the value to two significant figures and you'll get the change in the kinetic energy. Okay. I hope this is clear to everyone. Because ये मैं एक दफा review करवा दूं जो basic concepts है, then after that we'll do the past paper questions as well. Okay. Acha. So next up we have gravitational potential energy. Okay. So can anybody tell me okay, what is gravitational potential energy? G. Anybody who can explain okay, what is gravitational potential energy? सर इसका यही होगा energy possessed by a body due to gravity. The energy possessed by a body due to its position in the gravitational field. Okay, so the energy possessed by a body due to its position. Position का मतलब है position कह लो या height कह सकते हो in gravitational field. Okay, so this is the definition for gravitational potential energy. And what is the formula for gravitational potential energy? Formula क्या? MGH. Exactly. So the formula is mgh, where m stands for the mass, g stands for the gravitational acceleration, which is 9.81. So g is gravitational acceleration, which is 9.81, and h is the height. And we take the height in meters. Mass should be in kilograms. Okay, so this is the formula to calculate the gravitational potential energy. Okay, so I am just going to write down a question and I want you all to just do it yourself. इसमें थोड़ा इसमें आप लोगों को एक kinematics के साथ merge होके भी he can ask you a question. So let's say I am going to release a ball
from a height of 350 meter. Okay, a ball is released from rest at a height of 350 meter above ground. Okay, so ये ball है, the ball is initially at rest, ठीक है. So अब आपसे वो ये कहते हैं कि find first part में what we have to find, we have to find mass of the ball is 0.25 kg. Mass of ball is 0.25 kg. So you have to find the gravitational potential energy. फर्स्ट पार्ट में. दूसरे पार्ट में वो आपसे ये कहता है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So we have to state the law of conservation of energy. और थर्ड पार्ट में वो ये कहता है कि assume that there is no air resistance. ठीक है, assume okay, so assume there is no air resistance. Using the law of conservation of energy, you have to calculate, find is final speed. ठीक है, ओके. सो ये क्वेश्चन है. अच्छा, सो पहला पार्ट, अब वो कह रहे हैं कि बॉल है, बॉल जो है it is 350 meters above the ground. Initially the ball was at rest and what we do, हम बॉल को जब रिलीज करेंगे so the ball will fall downwards. Initially rest पे है तो u 0 है and the ball just hits the ground. अब आपसे कह रहे हैं calculate or find his gravitational potential energy. So we just have to use the formula for the gravitational potential energy, which is mgh, right? So gravitational potential energy का formula है mgh. Now the mass is 0.25 and the gravitational acceleration is 9.81 and the height is 350. अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्या आती है वैल्यू. सर इसमें ये मास हमने फाइंड करना है, गिवन है. Mass is given. ठीक है, the mass is given to us. यहाँ से इधर कर देता हूँ, ये फाइंड वाली जो स्टेटमेंट है मेरी. ठीक है, okay, so find gravitational potential energy. Now next up we have to, ये क्या आती है वैल्यू, what is the answer to the first part? 858.375. 8587 0.37. 858.37. Yes, sir. Okay, so this is the value. ठीक है, and we will round out the final answer to two significant figure, which gives us 860 joule. Acha. Now for the second part, he is asking you to state the law of conservation of energy. हाँ जी, किसी को याद हो कि what is the law of conservation of energy? जी.
Yeah, energy is neither created nor it will destroyed, Exactly. or it will convert it to one form to another. Exactly. So energy can neither be created nor be destroyed. Created nor destroyed, but it can transform from one form to another. It can transform from one form to another. G. Okay, so this is actually the law of conservation of energy. And what is the meaning of law of conservation of energy? कि आपके पास let's say, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि when the ball is at the maximum height, मतलब ये जब 350 meters पे है, तो इस point पे इसकी kinetic energy क्या होगी? What will be the kinetic energy when the ball was at the peak? Zero. Zero. Why? नहीं वो सारी मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई होगी. हाँ, so initially the kinetic energy zero है because the ball was not moving, right? Ball rest पे है, तो उसकी initial kinetic energy zero है, ठीक है? But इसकी जो gravitational potential energy है इस point पे वो maximum है, right? अच्छा, now when the ball reaches the ground, so what happens to the gravitational potential energy? जी. खत्म हो जाएगी वो kinetic energy. Yes, because when it reaches the ground, तो उसकी जो height है, it becomes zero. तो जब उसकी height zero हो जाएगी, तो उसकी जो gravitational potential energy है, that will be zero at this point. तो अब based on the law of conservation of energy, इसकी जो gravitational potential energy है, that has been converted into kinetic energy. So we say that the kinetic energy becomes maximum at this point. तो अगर इसकी kinetic energy maximum तो तब होगी ना if the ball reaches the ground with a certain velocity. Okay? So based on this concept, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो change in gravitational potential energy है, that will be equal to the change in kinetic energy. ठीक है? So I can say because if there is no air resistance, if there is no resistive force that is opposing the motion of the ball, तो कोई इसका मतलब ये होगा कि there are no energy losses that are taking place. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अब क्योंकि कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो उसकी जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर. सो वी हैव ऑलरेडी calculated the gravitational potential energy, and let's say change in kinetic energy will be final minus initial, but since the initial kinetic energy is zero, ठीक है? Okay, so let me just write कि gravitational potential energy की वैल्यू आई थी 858.37. मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई थी कि अगर आप कोई पिछले पार्ट की वैल्यू यूज करोगे तो बेटा यू हैव टू यूज मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली जो वैल्यू है दैट. ओके, नॉट द राउंडेड ऑफ वैल्यू. Now, let's say for the change in kinetic energy, if I use the formula 1/2 m v square minus u square. अब ये जो u है वो तो है ही zero, और we don't know the final velocity with which it reaches. So let's say if we just put the values 1/2 m की जगह I am going to write 0.25 v square. Now ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, when you shift it to the other side, it will be multiplied, और ये 0.25 v square से multiply हो रहा है. So when you shift it to the left, it will be
divided. So we have this expression. Now we can take square root on both sides. And if we take the square root on both sides, so we will get the final speed with which the ball reaches the ground. So can you please tell me the answer? Okay, what do we get after calculating this? Sir, 82.867. So we get 82.867. Yes, sir. 58.37 times 2 divided by 0.25. Are you sure? 20.7 नहीं आ रही बेटा calculator में मतलब you're putting the value incorrect. Can somebody else please check? So the final speed with which the ball hits the ground is 20.7 meter per second. Is this the answer that you got? Sir, 82.86. 82? Sir, 82.867 नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया तो यही आता है. Okay, okay, चलो ठीक है. Into 2 divided by 0.25. आप पहले कैलकुलेशंस को वो 6.67. So yes, so we get 82.9 or you guys are right. Okay. G. So yes, you were right. Okay, we get the value to be 82.9. So the answer is 82.9. And if I round off the final answer, so we can get 83 meter per second. Acha, can anybody tell me, is there any other way to calculate the final speed? G. सर G. सर अगर हम mgh और हाफ mv स्क्वायर को इक्विवेलेंट रख के मैथ्स के साथ मैथ्स कैंसिल करवा के v को अगर सब्जेक्ट बना लेंगे तो भी सेम यही Yes, you'll get the same answer through that. But since we've already calculated the gravitational potential energy, तो आप उसकी directly value भी put कर सकते हो. अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ. Is there any other way to calculate the final speed? देखो, if there is no air resistance, so what will be the acceleration? अगर मैं SUVAT use करूं, SUVAT. So beta, if I am going to use the SUVAT, so initial velocity has 0. We don't know the final velocity. We do know the displacement, that is 350 meter. Acceleration is 9.81 meter per second square. And we have to find out V. तो अगर मुझे V निकालना है, S, U और A पता है, तो can I use any equation of motion? Yes. So please use the third equation of motion, which is V square equals to U square plus 2AS. Final velocity is to be calculated 0 ka square 2 times 9.81 and the displacement is 350. So we take square root on both sides. So please tell me, okay, what is the final answer we get through this method? 72.9. Exactly. So we get the same answer, right? तो अब आप बेटा एक चीज ये याद रखो कि अगर तो लेट्स से कोई आपको स्पेसिफिक पार्ट ऐसा आता है जिसमें आपको वो ये कहता है कि assuming that there is no air resistance, so when there is no air resistance, so we can directly use the equations of motion. ठीक है? And we can also use the energy conversion. या हम law of conservation of energy को ज़हन में रखते हुए we can use that as well. ठीक है? अब ये तो वो केस हमने अभी डिस्कस किया है कि when the air resistance is negligible or when there is no air resistance. I am going to give you another question similar to this and I want you all to do that yourself. ठीक है?
let me just write the question. I hope this is clear to everyone now. Okay? So, should I add a little? अच्छा चलो मैं थोड़ा सा अब चेंज करने लगा हूँ. ओके सो आपके पास ये एक है क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं इसमें काइनेमेटिक्स को भी साथ आप लोगों को मर्ज करके बताऊंगा. सो a ball is thrown. So ये आपके पास ये पास पेपर के क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आते हैं. A ball is thrown vertically upwards with a speed of 15 meter per second. ठीक है, अब आपसे ये कहता है कि you have to calculate. ठीक है, the height of the building is, let's say, 40 meter. Calculate maximum height reached. सर इस चैप्टर को वो काइनेमेटिक्स के साथ लिंक करते हैं. Yes, मैं वही कर रहा हूँ. ठीक है, मैं अब इसको काइनेमेटिक्स के साथ मर्ज करके आपको जो है ना वर्क पावर एनर्जी का बताने लगा हूँ. ठीक है सर और कितने चैप्टर हैं जो काइनेमेटिक्स के साथ लिंक होंगे? बेटा, ये जितना आप पढ़ोगे ना वो सारा एट द एंड इंटरकनेक्टेड होता है. ठीक है, so they all are interlinked with each other. So we are assuming that the air resistance is negligible. So you have to calculate the maximum height reached by the ball and maximum gravitational potential energy. ठीक है, so you have to and maximum gravitational potential energy at that height. So you have to find this, and then you have to use the law of conservation of energy. Mass of the ball is 1.5 kg. So use law of conservation of energy to calculate his final speed at which ball hits the ground. Hits the ground. ठीक है? And one more thing, he is asking you to calculate change in gravitational potential energy, and he also wants you to find the change in kinetic energy for entire motion. G. Okay. Have you guys understood what he's asking you to calculate in this question? Everybody, please get this question a try, or then we'll just discuss it. ठीक है? हाँ जी, समझ आया? वो कह रहे कि एक बॉल है, बॉल को हमने बॉल जो है इट इज एट हाइट ऑफ 40 मीटर अबव द ग्राउंड. ठीक है, ये बिल्डिंग के ऊपर से हमने इसको थ्रो किया. अब बॉल को वी थ्रो द बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. So when we throw the ball with a velocity of 15 meter per second, the ball goes up, it reaches a maximum height.
ठीक है, एंड उसके बाद द बॉल विल फॉल डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि बॉल की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो रीच बाय द बॉल above ground, and he is also asking you to calculate and maximum gravitational potential energy at that particular height, ठीक है। तो जी, पहला पार्ट किसी को समझ आया कि क्या करना है पहले वाले पार्ट में? डिवाइड कर देंगे, मतलब कि दो हिस्से में, जैसे बॉल नीचे से ऊपर जा रही है उसके रहना। यस, परफेक्ट परफेक्ट जी, ओके। जी सर, मेरी क्लास में तो सुबह एक ही आ रहा था, शहीद। हाँ जी, मेरी क्लास में शायद चल रहा है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर, फर्स्ट पार्ट। अच्छा देखो बेटा, अब फर्स्ट पार्ट में ही वांट्स यू टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। बॉल जो है इट्स गोइंग इन द अपर डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वी यूज सुवाट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। मुझे ये बताओ मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और एक्सेलरेशन क्या होगी? What will -9.81, ठीक है। और कैलकुलेट हमने डिस्प्लेसमेंट करनी है, तो विच इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन यूज टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉल? सो वी कैन, दिस इज द, यस, आप लोग यूज करो एंड प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट दैट वी गेट। U is 15 का square 2 times minus 9.81 and the displacement is to be found. So that gives us 15 का square will be, ये please calculate करो और मुझे final answer बता दो आप लोग। I'll write down the final answer. टू 205.3 हो जाएगा। 20, okay, let me just check. So 225 over 19.62, सर 11.46 11.5 आ गया, 11.5। वो गलत हो गया था। हाँ जी, ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। सो हमसे वो क्या कैलकुलेट करवा रहा था? ही वांटेड अस टू कैलकुलेट द मैक्सिमम height reached by the ball above the ground. So the maximum height is going to be, देखो अब ये जो 11.5 है वो यहां से लेके यहां तक का है, दिस इज 11.5 मीटर। अब हमारी जो मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड होगी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट above the ground, तो हम 11.5 और 40 को ऐड कर देंगे। So the maximum height is going to be 40 plus 11.5 and we get 51.5 meter. अब आपसे उसने ये कहा है कि you have to find the maximum gravitational potential energy. तो maximum gravitational potential energy होगी उसकी maximum height पे। So we will use the formula mgh. M is the mass of the ball, which is 1.5. G is 9.81. And the height is how much? 51.5. So you just simply put the values in the expression. And what do we get? इसको multiply करके we get 757.8 jar. 0.8 jar, right? तो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा प्लीज फील फ्री टू आस्क जी।
सर ये जो आपने वो जो हाइट ऐड की है तो सर इसमें राउंडेड ऑफ वैल्यू को ऐड करेंगे या जो जैसे क्योंकि 11.46 आ रही मीटर आ रही थी इट्स टोटली अप टू यू। देखो फाइनल आंसर तो हमारा 52 होगा ना जब आप उसको। आपने तो कहा अच्छा मतलब बेटा ओरिजिनल का ये मतलब नहीं कि अब अगर मेरे 10 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है तो मैं सारी लूंगा। ओरिजिनल से मतलब ये है कि आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले लो तो तभी आपके पास यू गेट द करेक्ट पैटर्न। ओके अच्छा सर okay now for the second part he states that we have to use the law of conservation of energy to calculate his final speed at which the ball reaches the ground. So for the second part, we have to use the law of conservation of energy. अब मुझे जल्दी से ये बता दो maximum height पे इसकी kinetic energy क्या होगी? 0 Zero. 0 और gravitational potential energy जो है that will be maximum. And when it reaches the ground, so the kinetic energy will be maximum, but the gravitational potential energy will become zero. So since the air resistance is negligible, so can I say that change in gravitational potential energy will be equal to the change in kinetic energy? G. So change in gravitational potential energy from top to bottom, मतलब from maximum height till it reaches the ground, हमारे पास gravitational potential की value आई थी 757.8. तो 757.8, we use the formula 1/2 mv square minus u square. Again u 0 है. अब मैं सिर्फ टॉप टू बॉटम मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूं फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टिल ग्राउंड के लिए मैं देख रहा हूं ओके सो 757.8 the mass of the ball is 1.5 the final velocity is to be found please calculate the answer and tell me okay what do we get इससे क्या आ रहा है जी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है कोई कंफ्यूजन है तो बेटा प्लीज यू कैन आस्क मी 31 so we get the final velocity as 31.7 so this is the final value so we round off the answer we get 32 meter per second okay अच्छा अब आपसे वो ये कह रहे calculate is the change in gravitational potential energy for the entire motion. So we have to find the gravitational potential energy for the entire motion. ठीक है change निकालना है जी कैन एनीबडी टेल मी कि चेंज के लिए हम लोग क्या कौन सी हाइट यूज करेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे because the formula for gravitational potential energy is mgh तो अगर आप change in gravitational potential कर रहे हो so that is going to be mg into delta h delta is the symbol for change okay so the mass of the ball is 1.5 the value of the gravitational acceleration is 9.81 and can anyone tell me okay, what is the change in height for his entire motion देखो ये स्टार्ट है और ये एंड पोजीशन है तो उसकी हाइट में जो चेंज आया ये होगा आपके पास डेल्टा एच which is the height of the building itself so we will use 40 meters here is it clear everyone ये बात क्लियर है सर हाइट और पर सर समझ नहीं आई देखो बेटा स्टार्टिंग में द बॉल वाज एट दिस पोजीशन और एंडिंग पे उसने यहाँ पे हिट किया तो स्टार्ट से लेके एंड तक के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी द चेंज इन हाइट
or the change in displacement? G. Sir, 5886. Sorry? 5886 value. 1886. Yeah. I hope this is clear to everyone. If anybody has any confusion, तो मुझसे पूछ लो. But देखो बेटा, जब आप change लोगे ना, if you want to calculate the change in gravitational potential energy, so you need to analyze the change in its height or the change in its displacement. तो starting point से लेकर ending point तक जो उसकी हाइट में या डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो दैट इज डेल्टा एच तो वी विल यूज दैट वैल्यू नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर एंटायर मोशन अच्छा प्लीज टेल मी वन थिंग सॉरी 1.5 है ना ये यस 50 ये 1 Yes. 1 multiplied 9.8 multiplied by 40 यस जी तो सर 588.6 है बीच में पॉइंट रह गया 588.6 जाओगे अच्छा can you please sir. tell me the change in his kinetic energy as well we use the formula 1 over 2m v square minus q square the mass is going to be 1.5 the final velocity when it hits the ground is 31.7 और उसकी initial velocity was 15 meter per second अच्छा अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ कि kinetic energy is a scalar quantity or is it a vector quantity? कोई भी नहीं है स्केलर Scalar है नहीं होती ठीक है so kinetic energy is a scalar quantity okay because kinetic energy की कोई specific direction नहीं है जिसकी वजह से मतलब I am not considering the upward direction of velocity to be positive or downward वाली को negative नहीं मैंने लिया अच्छा ये मुझे बताओ what is the change in kinetic energy that we just get so what is the change in kinetic energy सर 584.9 so 584.9 जा ठीक है so अब आपके पास ये थोड़ा सा जो स्लाइड चेंज आ रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द राउंडेड ऑफ वैल्यूज दैट वी हैव टेकन अदरवाइज आपके पास जो चेंज है दैट वुड हैव बीन सर कंप्लीटली इसको नहीं बेटा दिस इज नॉट ह्यूमन एरर वो आप राउंडेड ऑफ वैल्यूज ले रहे हो ना दिस इज वाई ठीक है अच्छा सो दिस इज हाउ वी merge the क्या कहते हैं kinematics with the work power energy I hope it is clear to everyone so far ठीक है अच्छा एक बात और याद रखो बेटा कि अगर तो if he says कि this is a perfect elastic collision तो आपके पास जो बॉल होता है it will always rebound with the same energy and it will reach the same height अगर तो ये perfect elastic collision नहीं होगी तो फिर आपके पास जो जब वो rebound करेगा तो it loses some of its energy as well. I'll write this point as a note for you so you can remember it कि what it ठीक है सर मीटिंग एंड बड़ा देती है I'll share the link again then okay so you guys have to join instantly then if this meeting ends और next time के लिए please just download the Teams ताकि next time से I'll be taking all the classes on अगर if we have an online class so it will be on Teams so if it is perfect अच्छा याद है कि perfect elastic collision क्या होता था so please remember it's not necessary कि work power energy सिर्फ kinematics के साथ merge होगा ये आपका dynamics के साथ भी merge होता है तो ultimately ये जितने भी topics होते हैं ना they all are interconnected with each other so if it is a perfect elastic collision ठीक है so it rebounds with rebounds I hope the meeting has not ended yet. Thing.
Still, in 2 minutes. stand the call. Okay. G. So, any confusion in this so far? सर वो नोट में लिख रहा था हाँ ये लिख लो आप लोग, ठीक है. So if it is perfect elastic collision, it rebounds with same energy. ठीक है. Okay. ठीक है. It rebounds with same energy and reaches same maximum height. But ये practically ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत मतलब एयर रेजिस्टेंस है, देयर आर अदर रेजिस्टिव फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, तो एनर्जी लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से जब बॉल रिबाउंड करता है, ठीक है, सो इट डज नॉट रीचेस द सेम हाइट. तो वी डू से लेट्स से अगर ये सरफेस है, बॉल यहाँ से इधर, तो जब ये rebound करके let's say again if it reaches the maximum height, so this is actually perfect elastic collision. ठीक है. Perfect elastic collision का मतलब ये है कि हमारे पास जो total energy है that is being conserved and the kinetic energy is also being conserved. the meeting is about 1 second. और फिर ये बॉल जब नेक्स्ट टाइम, तो रियलिटी में दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. Perfect elastic collision. So let me just share the link again. Please join it back again because मैंने अभी past paper का question जो है, I'll be discussing the past paper questions with you guys. Okay? So this is a perfect elastic collision and this one is not a perfect elastic collision. I hope this is clear to everyone. If you have any questions, any queries in this, so please ask me. ठीक है. हाँ जी. जी. अच्छा जैन यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? कोई क्वेश्चन है? जी सर. नहीं. जी बेटा. हाँ जी वली और अहमद, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर बस कर दो यानी चलो गुड यार, यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? सर आपने कितनी देर पढ़ा लिया? बस मतलब 12 बजे तक पढ़ेंगे. 1 घंटा 1 घंटा हाफ एन आवर नो. दिमाग खराब है एक घंटे? नहीं नहीं बस आज तो हमारी मैथ्स की भी क्लास है ऑनलाइन शाम को. 12 o'clock. वो तो शाम को है ना, अभी थोड़ी ना है. ठीक है. ओके. वो 1 से 2 तो मेरी भी है. बाकी किधर गए? चलो मैं 2 मिनट के लिए और वेट कर लेता हूँ सबका. ठीक है. So then we just जस्ट स्किन ब्लैक आ गया. बोल रहे वो आपकी जो क्लास है तो दोबारा एक्सप्लेन करने में मुझे समझ नहीं आई. अच्छा चलो जब तक वो लोग दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं हमें, ठीक है,
तो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप कि हमने क्या पढ़ा है। वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट की है। वर्क डन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। Sir, please, the green doesn't on. I have shared my screen में से। सर आ रही है स्क्रीन तो आपकी। बेटा the screen has already been shared। जी रायान, आपको क्लियर हो गया बेटा? हेलो। Sir, मैं दोबारा हाँ जी। ओके रायान, आपको समझ आ गया सब? ओके हाँ जी। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, वर्क डन के बारे में। वर्क डन का यूनिट होता है जाउल एंड न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क डन इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट अप वी टॉक्ड अबाउट कि अगर आप फोर्स exert कर रहे हो at a certain angle, so that component of the force which is parallel to the distance will be used to calculate his work done। ठीक है, so आपने क्या किया? We just we have drawn two components of the force। The vertical component that is 30 sin 20, the horizontal component we got as 30 cos 20। So to calculate his work done, we use the formula of product of force and distance। तो force का जो horizontal component है which is 30 cos 20 times जो distance travel किया that is 150, so we get the work done। फिर what is energy? Energy is the ability to do work। kinetic energy हमारे पास आ जाता है सबसे पहले। So kinetic energy when an object is moving, so it possesses kinetic energy। The formula is 1/2 mv square। When you have to calculate the change in kinetic energy, so we use the formula 1/2 m v square minus u square। Okay, now what is gravitational potential energy? It's the energy possessed by a body due to its position or height in a gravitational field। Now, what is the law of conservation of energy? That energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another। Okay, so we just did some practice। फिर हमने इसे kinematics के साथ merge करके देखा है कि मिक्स होके आपको कैसे क्वेश्चन आएगा। इफ इट्स अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तो आपके पास जो rebound, it rebounds with the same energy and it reaches the same maximum height। Okay, so we'll just discuss one more topic that is about the internal energy, and after that I am going to end this lesson। ठीक है, so internal energy की जो we'll do the past paper question on Monday। So what is internal energy? So internal energy is basically, it is the sum of kinetic energy and potential energy of the atoms and molecules of a body। Okay, so it is the sum of kinetic energy and potential energy of the atoms or molecules of the atoms or molecules of a body। Okay, अच्छा, and one more thing। ठीक है कि अगर मैं if I have to plot a velocity time graph या बल्कि if I have to sketch, I am releasing a ball। ये बॉल है, ये बॉल को हमने रेस्ट से ड्रॉप किया है। इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है और इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। अब ये बॉल जो है जी, मैं भी एक ग्राफ स्केच
करना बताने लगा हूं। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। सो लेट्स से इफ आई हैव टू स्केच द ग्राफ ऑफ gravitational potential energy on the y-axis against time on the x-axis. So बेटा जब ये टाइम 0 पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, it adopts a quadratic path, and this is how ठीक है, this is the point from where the ball was released. Ball released, ठीक है, ये point वो है when ball reaches ground, और ये point वो है कि ball rebounds to maximum height, ठीक है, and please just remember one thing कि yeah, I hope this is clear to everyone. जी सर एयर रेजिस्टेंस है इसमें? किसमें? इस वाले ये जो ये वाला ग्राफ हमने भी ड्रॉ किया है। जी। हाँ जी, ठीक है। सो अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो स्ट्रेट लाइंस बनती। यस, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना mgh. So gravitational potential energy is directly proportional to its height, and जो gravitational potential energy है it's directly proportional to t square basically, ठीक है। So this is why we do it. अच्छा, सर इसका ग्रेडियंट क्या होगा? sorry, इसका gradient- अच्छा just a second please. नहीं खड़े हो अच्छा, so okay, इसके अलावा let's say we have to sketch a graph for the kinetic energy as well. तो बेटा स्केल कहाँ से आया? ये मैं आपको बताता हूँ अभी। let's say if I have to sketch a graph of kinetic energy against t, ठीक है, तो अब मेरे पास ये ग्राफ कैसा होगा, ये सो ये आपके पास इस पॉइंट पे द बॉल हैज बीन रिलीज्ड, ठीक है, इस पॉइंट पे बॉल रीचेस ग्राउंड, ठीक है, एंड इसके बाद अगेन बॉल rebounds to maximum height. Acha, now there is one very important thing that I want to tell you guys is, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है S is equals to ut plus half at square, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है इनमें एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, air resistance is negligible. Now, how do we know कि ये जो graphs हैं they are going to adopt a quadratic path? जो displacement की equation है that is S is equals to ut plus half at square. S is actually the height. तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे इधर से ये पता लगता है कि जो height है, height और time they both have a quadratic relation, ठीक है। सो अब क्योंकि हाइट जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, और जो हाइट है दैट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन टाइम। तो जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में एच की जगह व्हेन यू पुट ut plus half at square, so you will realize कि आपके पास
mg/t²। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का आपस में दे आर गोइंग टू हैव अ क्वाड्रेटिक रिलेशन। This is why we get a curve, U-shaped curve for the gravitational potential energy graph. एयर रेजिस्टेंस इसमें नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि जब वो रिबाउंड होकर वापस अपनी पोजीशन पे आया तो इट possesses the same gravitational potential energy as well. ओके? अब इसी तरह लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है? तो अगर आप v की जगह इफ यू पुट u plus at, तो अगेन यू कैन सी कि जो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन है वो भी एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बनेगा। प्लस a²t²। यू मतलब यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस entire relation, but directly you just need to remember कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम में भी there is a quadratic relation। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के दरमियान में भी देयर इज अ क्वाड्रेटिक रिलेशन। ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर जी। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस, बट यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली रिमेंबर कि काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन विद टाइम, they have a quadratic relation. I hope this is clear. Ji. If you have any questions, any confusion, beta, please feel free to ask. Anji. Anyone? So we are going to